अभी हम बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम देखते हैं वो कैसे काम करता है। बाइनरी सर्च इसके लिए फंक्शन बना लेते हैं। एक एरे होगी और उसकी एक टारगेट जो आने वाली सर्च करनी है। टारगेट ये हो गया, तो हमें मिड पॉइंट रिटर्न कर दे। रिटर्न मिड एलसीफ मिड टारगेट से लेस है। कि हमें रिटर्न कर दे -1। एक लिस्ट बनाते हैं। टारगेट वैल्यू हमने 5 सर्च करने हैं इसमें।
वैल्यू दे देते हैं। हम इसको रन करते हैं। ये 5 जो है 4 इंडेक्स पड़ा, तो मैं इंडेक्स रिटर्न करके दे दिया बाइनरी सर्च के जरिए।